गुड मॉर्निंग। यह हमारी एमएससी प्रीवियस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। रिएक्शन मैकेनिज्म में हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, और रिएक्शन इंटरमीडिएट में हमने शुरू किया कार्बिन्स। कार्बिन्स में अब तक हम पढ़ चुके हैं वेरियस टाइप्स ऑफ कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन एंड ट्रिपलेट कार्बिन्स, व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन सिंगलेट एंड ट्रिपलेट, देयर स्टेबिलिटी. Important point was about their stability. Normally you know कि singlet carbene is less stable and than the triplet carbene due to the repulsion reasons. But in case of dihalocarbons, singlet is more stable as compared to triplet. It is because of back bonding, as it was explained to you on earlier videos. And then we did various types of reactions involving carbons, and so far we have studied that is carbons undergo various types of reaction. Addition reaction we have studied. एडिशन रिएक्शन में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि अगर सिंगलेट कार्बिन है तो उसका जो अनसेचुरेटेड एडिशन होगा दैट इज स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर, दैट इज कॉन्फ़िगरेशन इज रिटेन्ड एज सच. कॉन्फ़िगरेशन जो है बिल्कुल वैसा का वैसा क्या हो जाएगा उस केस में रिटेन हो जाएगा. लेकिन अगर हमारे पास ट्रिपलेट कार्बिन हम लेते हैं तो इंटरमीडिएट बायरेडिकल इज फॉर्म, और बायरेडिकल बनने के कारण bond rotation is possible, and as a result of this mixture of product is expected. Then we started insertion reaction, और insertion reaction का एक पॉइंट हम देख चुके हैं अब तक. and what was that कि insertion reaction अगर हम सिंगलेट कार्बिन लेके कर रहे हैं तो स्पेसिफिक नहीं है. that intermolecular insertion can takes place at any of the position, primary, secondary or tertiary. But if it is a triplet carbene, then triplet carbene prefers to grow at primary position, and the ratio of primary, secondary and tertiary is 4.4 is to 1.6 is to 1. This is okay. Okay, now we'll take some another examples of insertion reaction. That is, today we'll study about intramolecular insertion. Intramolecular insertion reactions of carbon. Intramolecular insertion reaction of carbon. Now this type of insertion can be of two types basically. It can be 1-2 insertion, or it can be 1-3 insertion. Let us take some examples of how intramolecular insertion can takes place. Now as a result of intramolecular insertion, alkenes are formed or cyclopropane ring is also formed. Examples. Take examples of this. Say we have this alkyl carbene. See we have this alkyl carbene, and how intramolecular insertion can takes place is, let me show you. Let me change the pen please. Just a minute. थोड़ा पता चल जाएगा आपको कि how it is taking place in this case. Now what happens if this electron pair moves at this position and this position hydrogen comes at this position. Now as a result of this, what will be the change? It will be CH3 CH2. Here it will be now CH, and here it will be now double bond CH. That is, as a result of intramolecular insertion, an alkene has formed. Let us take some more example of intramolecular injection. It is very interesting. See we are having this carbene is there. Now see what can happen in this case. ये बहुत सारे reactions हमारे काम भी आता है. देखो this reaction वहाँ पे हमें this electron pair if comes over here, and this it is similar to this position, but a result of this is ketene is formed as a result of this. Ketene, the product formed as a result of this is ketene. Okay, let us take some more example of intramolecular injection. See we have RCH, R dash and CH. This is the carbon. Now see what can happen in this is, and how 1-3 insertion takes place. See this electron
pair can come at this position, this carbon, and this carbon can come at this position. So as a result of this, bond is formed between this and this. A bond is formed between this and this carbon. So what will be the result of this? It will be R. This R is here, this R is as such, this is C. Now this C remains as such, C, R dash H and C. A bond is formed between this and this carbon. As a result of this, a cyclopropane derivative is formed. Similarly, we can see another example. Say, let us take this example. All these examples are very useful example for you. Now see, in this case, say let this be a triplet carbene like this. What can happen is this electron pair will move over this position. It will form double bond CH2. This will form double bond CH2, and this position migrates at this position. So what will be the result of this? As a result of this, we will get this. Again, unsaturated is generated at two position. Next example लेते हैं इसका. Next type of reaction after ingestion reaction, third type of reaction let us take, and that is addition to benzene. Next example let us take is addition to benzene. Now in case addition to benzene, कार्बन्स जो हैं एरोमेटिक सिस्टम पे ऐड करती हैं तो रीअरेंज से प्रोडक्ट बना सकते हैं with a ring enlargement in position. For example, see benzene. ये इसका फर्स्ट हाफ हम बहुत कॉमनली यूज़ करते ही हैं कि this is this, when this singlet carbon is added to this, it will be added at this. कितनी रिएक्शन में हम ये इस रिएक्शन का हम यूज़ करते रहते हैं. बहुत सारी रिएक्शंस हमारे पास ऐसी बनती हैं जिनमें दिस टाइप ऑफ साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव इज फॉर्म. ओके, अब क्या होता है, ये नेक्स्ट स्टेप जो है आप पढ़ते रहते हैं, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक एडिशन. Cyclic reaction, and as a result of this electrocyclic reaction, ring enlargement takes place. What happens is ring enlargement takes place, that is if this bond migrates to this position. So what is the position? A 7-membered ring is formed. 7-membered ring is formed. 7-membered ring को बनाने के लिए देखो 1 2 3 4 then 5 6 और ये 7. This double bond is there, this double bond was there, and this is generated. Cycloheptatrine is the ring formed. Cycloheptatrine ring is formed as a result of this. Okay, see, let us take one more example of कार्बिन रिएक्शन. कार्बिन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सारी रिएक्शंस हमारे बहुत सारी रिएक्शंस में काम आती हैं. अब मान लो साइक्लोएल्काइल ग्रुप इज ए सब्सटेंट. साइक्लोएल्काइल ग्रुप सब्सटेंट है किसी कार्बन पे, देन रिंग एक्सपेंशन टेक्स प्लेस, एंड दिस टाइप ऑफ रिंग एक्सपेंशन, सी cycloalkyl, cyclopropyl ring is there in addition to this. What will happen? It will result in the formation of a ring expansion, that is 4-membered ring will be formed as a result of this with a double bond in this. This will come at this position, this carbon is attached to this, and as a result of this cyclobutene is the compound formed. Cyclobutene is the compound formed as a result of this. Okay, let me change the page first please and take next example of reactions of carbene. See, next example of reactions of carbene. Say next example of reactions of carbene when it is generated in a 3-membered ring.
See, it is generated in a three-membered ring. Allenes are formed by rearrangement. Three-membered ring. Okay. Say we have, इसका जनरेशन दिखाते हैं. We have this compound RR. See, this is there. इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं हेलोजन में. Br and this is also say Br, and say here we have R and here we have R. Okay. Now when it is treated with alkyl lithium, a carbene is formed. The carbene formed in this case will be this. Here you have got R, here you have got R, and here is the carbene formed as a result. Now when this इस कार्बन का रीअरेंजमेंट होगा और रीअरेंजमेंट से प्रोडक्ट फॉर्म जो क्या बन जाएगा, एलिन्स विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस. एंड हाउ एलिन्स आर फॉर्म्ड, दैट आई एम शोइंग थ्रू दिस. ओके, हाउ एलिन्स विल बी फॉर्म्ड. सी, if this electron pair comes at this position, this electron pair comes at this position, and this electron pair comes at this position, तो R इसके साथ यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये इससे जुड़ा रह जाएगा R. तो प्रोडक्ट फॉर्म विल बी R CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH R. That is, allenes are formed as a result of this in this case. Okay, let us take some more example of reactions of carbene. Say, this is very interesting example. Say, next example of mark करके नोट करते हैं, इसका specific example है. See, we have a benzene ring. See, we have a benzene ring, and to this ring we are treating it with dibromomethane. Now, what is this? Dibromomethane gives us the CH, that is bromomethylene carbene is formed. Bromomethylene carbene is formed. अब इसका रिएक्शन कार्बन से हमने पढ़ा है. What will happen? Addition reaction will take place, and as a result of this addition reaction, product formed will be, this will remain as such, this will remain as such, and here you will get CH2. CH2 के बजाय यहाँ पे क्या है, एक H है और एक क्या है, Br. This is the ring formed. Now see, very interesting. What will happen? Again, this bond will cleave. You can see this bond is cleaved, and as a result this comes at this position, and 6-membered ring will be converted to 7-membered ring, and this bromide is there. Why this is taking place, आपको लिखते ही क्लियर हो जाएगा, नाम आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ बन रहा है. देखिए, as a result of this you are getting a tropylium cation which is highly stable. आपको पता है 2 2 4 5 6 और ये 7-membered ring. This double bond, this double bond, this double bond. When this cleaves and this bond comes over here, तो here you will get positive charge. देखिए, ये bond cleave होके this is coming at this position, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, positive charge. तो here you will be getting a positive charge, and this, and you will be left with here anion. This tropylium bromide is the form. Tropylium bromide is formed, and this is highly stable because of aromaticity. So they were about the reactions intermediate, and reaction intermediate में now we have studied about carbenes. कार्बिन में ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपको मिलेगा, कार्बिन का क्वेश्चन किस में से मिलेगा आपको, स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, स्टेबिलिटी एंड स्ट्रक्चर. और रिएक्शंस एज सच, रिएक्शंस की बजाय ये रिएक्शन कहाँ होती हैं, जितनी भी हम रिएक्शंस पढ़ते हैं, बहुत सारी नेम रिएक्शंस हम पढ़ रहे हैं, बहुत सारी दूसरी रिएक्शंस हम पढ़ते हैं, उनमें कहीं ना कहीं जहाँ भी इंटरमीडिएट बनता है वो सारे इन एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाता है कि कैसे कार्बन्स के इंटरमीडिएट बनते हैं और कार्बन्स कैसे होता है.
कार्बिन्स के बाद हम नेक्स्ट इंटरमीडिएट के रूप में पढ़ेंगे, जो कि बहुत कम होता है, वो बिल्कुल हमने नहीं पढ़ा होता है पहले, एंड दैट इज़ अबाउट नाइट्रीन्स। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट नाइट्रीन्स के बारे में पढ़ेंगे। कीप डूइंग योर वर्क। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, बार बार इसको बोलते हैं, आप इसको फॉलो कर रहे हैं नहीं, या आप जानते हैं कि आपको इन वीडियोस को बार बार देख के कॉपी में नोट्स बना रहे हैं। जो एक्सप्लेनेशन और जो लाइन में बोलता हूँ उनको अपने नोट्स में लिख लेना है, और इससे जब आप रिवाइज करोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह तैयारी हो जाएगी। ओके, कीप डूइंग योर वर्क। थैंक यू वेरी मच।